two forces having magnitudes A and A by 2 are perpendicular to each other. Then the magnitude of their resultant is option A 5A by 2, option B root 5A by 4, option C root 5A by 2 और ऑप्शन डी रूट 5A स्क्वायर बाई 2। चार ऑप्शन, दो फोर्सेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, पहला का A और दूसरे का A बाई 2। क्या है मैग्नीट्यूड्स? A is the magnitude of the first force and A by 2 is the magnitude of the second force. And both these forces it is given are perpendicular to each other. That means the angle between these two vectors are 90 degree. Then we have to find the resultant of these two vectors, resultant magnitude of the resultant vector. तो दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके रिजल्टेंट के लिए एक स्पेशल फार्मूला है। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और ये भी दिया हुआ है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। वो क्या है? रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, दीज टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर A and A by 2 will be equal to square root of A square and A by 2 square. According to the formula, we can write things like this. वो फार्मूला क्या है? ये फार्मूला एक्चुअली पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से डिराइव किया हुआ है। ये फार्मूला क्या है? जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, तो उनके रिजल्टेंट के लिए फार्मूला होता है, यदि दो वेक्टर्स P एंड Q हो, P and Q are two vectors whose magnitudes are P and Q respectively, then the resultant of these two vectors will be equal to resultant R is equal to square root of P square and Q square and 2PQ cos theta. This is as per the parallelogram method of vector addition. The resultant of these two vectors will be equal to this. It is given in the question that P and Q, both the vectors are perpendicular. In the case of perpendicular vectors, this will be reduced to P square and Q square. यदि P और Q दोनों परपेंडिकुलर है तो यानी इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सिंस थीटा cos 90 इज इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म रिड्यूस 2P की cos थीटा रिड्यूस हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। इसलिए जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए ये वाला डायरेक्ट फार्मूला, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये आपने जो वेक्टर्स पढ़े हैं, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े, वो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ IIT JEE मेन। तो जस्ट put the values and find the magnitude of resultants. This will become A square and A square by 4 is equal to square root of 5A square by 4 is equal to square root of 5A upon 2. So the resultant of these two vectors which are perpendicular to each other, the magnitude of the resultant of the two vectors A, whose magnitudes are A and A by 2, will be equal to square root of 5A upon